Hello and welcome to episode 23 of PSL Lounge. I am your host Behram Qazi और आज मेरे साथ दो गेस्ट्स हैं जो पहले हमारे साथ होस्टिंग कर रहे थे former GM of the Jamaica Tallawahs Ali Khan and then of course our regular guest former Pakistan Test cricketer and chief selector Mohammad Wasim. और वसीम भाई बड़े दिन हम एक्साइटिंग मैचेस के बारे में बातें करते रहे, आज जरा थोड़ा डल हो गया मामला, काफी वन साइडेड मैच था और लाहौर ने तो कुछ चीथड़े ही उड़ा दिए हैं इस्लामाबाद के. I don't know, ये अली के आने से हुआ है. While he was away, we had some exciting matches. लेकिन I think obviously पिछले मैचेस हमने देखा है, same ground, same pitch, but it's not going to happen every day, especially when you're chasing big totals. और आज जो main difference हमें नजर आया, obviously that's the quality of the bowling of Lahore Qalandars. Qalandars तो हमने पहले भी बात की थी कि इनके runs में तो आप normally you can add on maybe 20 to 30 runs. कि जब आप चेज कर रहे हैं तो आपको 170 नहीं 200 चेज करना है. आज भी 250 नहीं बल्कि ये 250 समझिए, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग की क्वालिटी है वो टॉप नॉच है. लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि इस्लामाबाद की बॉलिंग यार बिग वरी पहले भी थी और अभी भी रहेगी. अब तो आज मैं पता क्या सोच रहा था, मैं भी अली इस पे थोड़ी जिस पे अली भी बात करेगा कि अक्सर हम कहते हैं जी कि हमारी बॉलिंग की जो क्वालिटी है वो बहुत जबरदस्त आ रही थी, बैटिंग में नहीं आ रही थी. नाउ द क्वेश्चन इज हमारी बैटिंग का स्टैंडर्ड ऊपर जा रहा है या बॉलिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा सा नीचे आया है. यू हैव टू फिगर दैट आउट नाउ. मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा मैं इस दफा के अगर हम देखते हैं जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग है, टैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ, नॉट द स्किल्स के पेस है बाकी चीजें हैं, लेकिन जो टैक्टिक्स हैं बॉलिंग के वो इस दफा मुझे कम लग रहे हैं. कुड बी ड्यू फैक्टर, कुड बी एनीथिंग, लेकिन मुझे लग रहा है कि उस तरह की बॉलिंग हो नहीं रही जिस तरह की हमने पहले पीएसएल के अंदर देखी. आपने बात तो ठीक की वसीम भाई कि इस्लामाबाद की बॉलिंग जरा वीक लग रही है, बट दे डिडंट हेल्प देमसेल्व्स. एंड आप दोनों इस पे बात करें, अली यू कैन गो फर्स्ट. के ड्रॉपिंग फखर जमान ट्वाइस, एक दफा बिल्कुल ही लो स्कोर पे और आसिफ अली के लिए रेगुलेशन चांस था वो स्लिप्स में, उसके बाद हसन अली ने डीप में भी ड्रॉप किया. एंड देन फखर इज द सॉर्ट ऑफ बैटर जिसको आप थोड़ा सा रिप्रीव दे दो तो देन ही कैशेस एंड ही गोज बिग. जसप्रीत बुमराह से ही पूछ लो आप ये बात उस चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में जिस तरह नो बॉल हो गई थी एंड देन फखर वेंट ऑन टू गेट 100. ही हैज दैट टेंडेंसी कि वो आपको रियली ही मेक्स यू पे. एंड how crucial was that dropped catch, or were those two dropped catches in the context of the game? आप दोनों के ख्याल से. Yeah, it was a huge drop, right? And as you said, I mean, you mentioned right, Fakhr has this ability to kind of cash in on these opportunities. So I think great performance obviously by Fakhr. Humne last few days mein Rawalpindi has become the ground of centuries, right? T20 centuries की भरमार हो गई. पिंडी में pitch बहुत अच्छी है, quality of bowling I would say is what it is. I think मैं वसीम भाई के जो सवाल जो उन्होंने पॉइंट रेज किया, जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग है, आई थिंक जो क्वालिटी ऑफ बॉलर्स हैं वो अच्छे हैं. जैसे अगर आमिर को देख लें या इवन इस्लामाबाद के एक आध जो बॉलर्स हैं, फजल फारूकी इज हैविंग अ लॉट ऑफ सक्सेस. आई थिंक द इशू इज बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जिनका पूरा अटैक अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से जो एक बॉलर या दो बॉलर बहुत अच्छे हैं फिर वो भी नजर नहीं आते, because they can hit them out of the attack or they can kind of go for example अगर आप कराची को खेल रहे हैं, you don't really have to go after आमिर. उनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर आप हमला कर सकते हैं. and I think वही चीज़ लाहौर के पास नहीं है, राइट? लाहौर के बाद एक अच्छा बॉलर, इट्स रिलेंटलेस. वही चीज़ हम पाकिस्तान में देखते हैं जब हम पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर हम बात करते हैं. अक्सर आई एम वन ऑफ दोज क्रिटिक्स अबाउट स्टाइल ऑफ प्ले, लेकिन पाकिस्तान हैज अ क्लियर स्टाइल ऑफ प्ले कि हम बहुत we're not going to score 240 रन्स. हमारे पास वो वाली शायद बैटिंग नहीं है, लेकिन हमारे पास बॉलिंग वो वाली है जो रिलेंटलेस है. हारिस, शाहीन, नसीम, शादाब, और वही चीज़ हम लाहौर में देख रहे हैं. But as you said obviously about Fakhr, Fakhr is really cashing in. He's had a great tournament. He's really led at the top of the innings. यही Fakhr कुछ साल पहले जब लाहौर की टीम बहुत अच्छी नहीं थी, he wasn't the same player, but now उनकी टीम बहुत अच्छी है. मतलब जो उसकी जो पूरी टैलेंट है वो नजर आ रही है. वसीम भाई आप कुछ कहना चाहेंगे फखर? देखिए फखर का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड भी देखते हैं ना कि फखर जल्दी आउट होते हैं तो बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं. ही इज नॉट वन ऑफ दोज के विल हैंग अराउंड फॉर अ व्हाइल. उसके बाद वो बहुत कम उसके फेलियर होंगे कि जब वो सेट हो गया तो उसके बाद ही गोज फॉर द बिग वन. अब ड्रॉप कैचेस आप उसी चीज से आप रिलेट करते हैं कि अर्ली ऑन वो आपको चांसेस देता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि वो अर्ली आपको समटाइम आपकी लग चलती है, वो बॉल गैप्स में चले जाते हैं, लाइक बिफोर के डिसीजन अंपायर बॉल के ऊपर चले जाते हैं. सो ही गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज. लेकिन अगर आप वो अपॉर्चुनिटीज अवेल नहीं करेंगे, ही इज गोना हर्ट यू. और
he has proven that on time and time again. उसने बार बार ये चीज की हुई है, और आज जब कैच छूटा था उसके बाद से एकदम से आपको वो डिफरेंट वो फखर नजर आए। तो जो नेक्स्ट 2-3 बॉलों बाद उन्होंने जो छक्का मारा था ऑन साइड के ऊपर, वो उसने एक स्टेटमेंट दे दी थी कि भाई आई गेव यू माय अपॉर्चुनिटी, यू डिडंट अवेल इट, नाउ इट्स माय टर्न, एंड दैट्स फखर जमान फॉर यू। के आई थिंक उसको एक थोड़ी सी ना वेकअप कॉल, एक झटका चाहिए होता है। समटाइम इट्स प्ले एंड मिस, समटाइम इट्स अ ड्रॉप कैच, कोई भी अपॉर्चुनिटी उसके बाद फखर कम्स टू हिज बेस्ट, और वही हुआ आज। और जो कैच भी था, एक तो मेरा नहीं ख्याल है कि आसिफ अली इज द नेचुरल स्लिप फील्डर टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके से वो खड़ा हुआ था, और गुड मतलब पॉइंट। वो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था कि वो कर भी, मतलब वो पोजीशन उसने बनाई हुई नहीं थी। तो क्योंकि T20 में नॉर्मली क्या होता है कि आप जो स्लिप फील्डर है वो तो कोई रखता ही नहीं है, अगर रखते भी हैं तो वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, याद जरा करके देख लेते हैं। तो इट्स नॉट लाइक अटैकिंग टैक्टिक अपने आउट करने के लिए रखा हुआ है, वो जरा बैट्समैन पे प्रेशर डालने के लिए रखा हुआ है। लेकिन जब आप इस अप्रोच से जाते हैं, देन यू डोंट थिंक कि सिर्फ में खड़ा हुआ कौन। अब टेस्ट मैच में या वनडे में अब एक स्लिप खड़ी है, आप आसिफ अली को नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको पता है यार अपॉर्चुनिटी आ सकती है, दैट कैन कॉस्ट अस। तो आज मुझे लगता है कि उन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कुछ स्लिप रखी हुई थी। टेस्ट मैच में आसिफ तो अली ने शायद देखा हम उसको वैसे ही नीचे ना कैच रखें था। वसीम भाई आसिफ अली को टेस्ट मैच में, तो वो शायद उनकी जगह ना बने, मगर नहीं, अभी हाँ तो काफी। स्टॉट फील्डर है। देखिए ये, हाँ, ये देखिए ये मिस्टेक मतलब पाकिस्तान टीम के अंदर भी हुई थी, जब फखर जमान ने एक्चुअली कैचेस छोड़े थे। तो आई हैव टू रिंग सकलैन एंड बाबर। मैंने कहा ऑब्वियसली जब सिलेक्शन जब मैं करता था, मैं उसमें फील्डर की पोजीशनिंग और इन चीजों का भी डेटा मेरे पास होता था। आई रिंग देम अप, इफ्तिखार योर बेस्ट स्लिप फील्डर, व्हाई ही इज नॉट इन द स्लिप, व्हाई फखर वाज स्टैंडिंग इन द स्लिप, हु ड्रॉप्ड अ कैच। वो उसके बाद इफ्तिखार आया, ये टुक सम अमेजिंग कैचेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप। तो ये चीजें मैटर करती हैं। तो आसिफ का वहां खड़ा होना ही क्वेश्चन मार्क था, जिस तरीके से उसने कैच छोड़ा है, उसके बाद उससे रन्स भी नहीं होने। तो मैं उसी टाइम कह दिया था अब इससे कुछ भी नहीं होना, क्योंकि उतना वो बोंगा सा आपने कैच छोड़ा, और उसके बाद जब वो सो कर गया, तो आप वैसे एज अ बैट्समैन भी आप गिर जाते हैं यार, मेरी वजह से देखो 110 रन उसने एक्स्ट्रा बना दिया। आई थिंक दैट बिल्कुल वाज द बिल्कुल। टर्निंग पॉइंट। लेकिन फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत पुअर है भाई, बात तो PSL का बात तो बहुत पुअर दुरुस्त है। देखें, कैचेस विन मैचेस इज व्हाट शादाब खान सेड इन द पोस्ट मैच सॉर्ट ऑफ लिटिल इंटरव्यू एज वेल। और जहां पे आसिफ अली ने वो कैच छोड़ा, वहीं पे आउटस्टैंडिंग कैच हारिस रऊफ ने लिया ना, फिर गुरबाज का वो है। इवन लॉस्ट हिज बैलेंस बट स्टिल मेड दैट स्टिक। और एक आखिरी बात मैं फखर के बारे में स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहता हूं वसीम भाई, कि वी वर टॉकिंग अबाउट आजम खान एंड हिज एबिलिटी अगेंस्ट लेग स्पिन द अदर डे, मगर अगर आप फखर जमान को देखें, जिस तरह वो लेग स्पिन को मारने लग गए में डाउन ऑन वन नी, कुछ सीजन्स पहले शायद तबरेज शमसी की फेंटी लगाई थी, और अब हमने देखा जिस तरह शादाब खान, समवन जिनके खिलाफ रिकॉर्ड इनका इतना अच्छा नहीं है, उनको भी बुरी तरह ग्राउंड से बाहर मतलब लंबे लंबे छक्के दिए। तो इनकी जो इंप्रूवमेंट है वर्सेस लेग स्पिन, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए डेफिनेटली इंप्रूवमेंट भी आई है, और फखर का जो थोड़ा वीकर पॉइंट था और अभी भी वो है अर्ली ऑन, कि अगर ऑफ स्पिनर आता है उसके सामने, द बॉल इज टर्निंग अवे फ्रॉम हिम, ये उसका इश्यू था। पास में आपने देखा होगा इंटरनेशनल मैचेस भी टीमें लगा देती थी ऑफ स्पिनर, तो वहां उसको थोड़ा अर्ली ऑन, बाद में वो ऑफ स्पिनर को भी अच्छा खेल लेते हैं। उसने अश्विन को, जडेजा को, सारों को खेला हुआ है, आपको पता है किस तरीके से उन्होंने पिटाई की है। तो अर्ली ऑन थोड़ा सा फंसते थे। लेकिन अभी आई थिंक जो उनकी ये स्लॉप स्वीप की, या आप जो नी नीचे रख के शॉट मारने की बात करें, उसकी परसेंटेज देखेंगे तो बहुत बेहतर आपको नजर आ रही है। पहले उसमें कम सक्सेस मिलती थी, अभी वो अभी 10 मारेगा तो उसमें से 7 से 8 वो कनेक्ट कर रहा है डिस्टेंस। आई थिंक मैंने तो उसने की है। और एक चीज जो और उसने मतलब पिछले 1.5 साल से जो बड़ी मेहनत कर रहा है, वो रिवर्स स्वीप के ऊपर, उल्टी सीधी दोनों स्वीप के ऊपर। तो फकर इज वन ऑफ दोज के इज वेरी कीन कि यार मैंने सीखना है आगे चलना कैसे। तो इट वाज वर्किंग हार्ड, और आई थिंक इंजरी की वजह से ऑब्वियसली जो गैप आ गया था उससे उसने थोड़ा सफर किया, बट सिंस हिज रिटर्न वो आपको दिन ब दिन बेहतर प्लेयर नजर आ रहे हैं, और दैट्स अ साइन ऑफ अ वेरी गुड प्लेयर। या स्किल सेट हमेशा इंप्रूव होता रहता है। एक जो वो गाइडेड शॉट टू थर्ड मैन है फास्ट बॉलर की, वो भी ही इज रियली ओन्ड दैट शॉट, और काफी उसको रिलीज शॉट के बेसिस पे भी इस्तेमाल करते हैं। अली खान, यू हैव बीन जनरल मैनेजर फॉर टीम एंड हैव असेंबल्ड T20 यूनिट्स. Fakhar Zaman is the sort of batter who goes at a strike rate of over 200 when he's clicking. How much would you value that sort of a player in this format? I think it's huge, right? Specifically अगर आपके पास लोकल प्लेयर ऐसा है जो इस किस्म की बैटिंग करता है, वही चीज़ हमने फ़खर को देखी लाहौर के साथ करते हुए बहुत सालों से देख रहे हैं। इस साल खास तौर से हमने we expect something similar from Sharjeel, और Sharjeel we've seen struggle. So the value of having that kind of player जिस किस्म का फ़खर है, और उसके अलावा फ़खर की जो बहुत अच्छी चीज़ है कि
he's very fit, right? So he can take those doubles and singles. And I think एक जो चीज़ जो फ़खर को help करेगी ना, I would love Wasim to comment on this as well, is that Abdullah is now opening the batting with him. पहले Tahir Beg था, and Tahir actually just had a pretty interesting tournament. I think एक अच्छी find है लाहौर के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए. लेकिन I think having Abdullah there, I think the rhythm of their partnership is going to be better. And I think Fakhar might play even better now that Abdullah is playing next to him. Interesting, because I thought Tahir Beg was doing a decent job और मुझे कुछ खास समझ नहीं आई कि उनको इतना ड्रॉप क्यों किया है. तो वसीम भाई, आप ही क्या टेक है इस सब पे? मैंने उस टाइम I think about 3 matches ago I told you that I can see Abdullah opening the batting for Lahore और बहराम का ये आई प्रो है ना इतना ऊपर गया था कि but I could see that happening. I think मुझे लग गया था कि eventually, क्योंकि एक स्लॉट आपकी जो है वो आप एक एक्स्ट्रा आपकी खाली हो रही है नीचे, अगर क्योंकि अब्दुल्ला बेसिकली इज एन ओपनर, तो अगर वो अच्छी फॉर्म में है और वो टायर बैक ऑन एंड ऑफ उसने कुछ इनिंग्स उसने हिंट कहते हैं शो किया है, लेकिन वो ही फेल टू बैट अ लॉन्गर पीरियड एक तो, और दूसरा जो स्ट्राइक रेट उसका जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं लग रहा था. लग तो रहा था कि वो मार रहा है, लेकिन वो ये एंडेड अप स्ट्राइक रेट अराउंड 120 इतने का. तो आई थिंक उससे बेहतर ऑप्शन उनको नजर आया अब्दुल्ला का. और जो अली ने बात की है दैट्स अ वैलिड पॉइंट कि आज तो चले अब्दुल्ला जल्दी आउट हो गया है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि ये दोनों जिस तरह की फॉर्म इनकी लगी हुई है, जो दोनों एंड से ऑल गन्स आर ब्लेजिंग, तो उसके बाद तो बड़ा इनका जो पावर प्ले है और ज्यादा बेहतर हो जाएगा. और आई थिंक इसमें आज कामरान गुलाम स्टिल थॉट कि थोड़ा सा वो तो स्ट्राइक रेट अर्ली ऑन बेहतर करना होगा. ही कॉट ऑफ वेल लेटर ऑन, लेकिन आई थिंक ऊपर से स्टार्ट जब उनको एक अच्छा मिल जाएगा, और ये दोनों आप कह सकते हैं कि टेक्निकली भी बेहतर प्लेयर है. फखर की टेक्निक उस तरह मतलब देखने में शायद इतनी अच्छी नहीं लगती है, बट इट्स वेरी इफेक्टिव. और अब्दुल्ला तो वैसे ही Right. टेक्निकली आपका करेक्ट है. तो आई थिंक दे फाउंड द राइट कॉम्बिनेशन, और इसको प्ले ऑफ में तो इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे वो ओपनर्स का. क्या आपको लगता बाकी है, एक सॉरी चीज जस्ट अभी बात आप कह रहे थे हाँ अली के हाँ बैराम, अभी कि बोले obviously बोले Ali has been with the franchises और the Caribbean League के भी रहा है. तो उस दिन भी हम जो बात कर रहे थे, और मेरा still I believe कि जो आपके foreigners हैं they can win you matches, but the local players will win you the championship. Is it the same pattern what you have seen in the Caribbean League also? I think it's the same pattern everywhere, right? जब आप अगर आप बांग्लादेश में टीम बना रहे हैं, श्रीलंका में बना रहे हैं, इंडिया में बना रहे हैं, आपका जो कोर है उसको लोकल होना चाहिए. और उसी तरीके से अगर आपने लाहौर के अंदर जो ट्रांजिशन देखी है, अगर आप शुरू में देखें तो लाहौर वाज बिग नेम्स, अननोन लोकल प्लेयर्स. लेकिन जब उन्होंने तब्दीली जब आई है लास्ट ईयर, वो जब आई है जब अब्दुल्ला शफीक टीम में आया, जब कामरान गुलाम टीम में आया, और जब उनका पूरा बॉलिंग अटैक बन गया, ऑब्वियसली वी सीन द इंप्रूवमेंट ऑफ शाहीन एंड हारिस. फिर जब राशिद आ गया, फिर राशिद के साथ जमान आ गया, वहां से हमने तब्दीली देखी. अगर हम इस्लामाबाद को देखते हैं, इस्लामाबाद इज ह्यूजली कंसिस्टेंट इन पीएसएल. व्हाई? बिकॉज तकरीबन 8 साल से उनके तकरीबन सेम कोर है, और इट्स अ कोर ऑफ रियली गुड यंग पाकिस्तानी प्लेयर्स. तो अगर आपके पास अपने ओन लोकल प्लेयर्स नहीं है, जब मैं जमैका के साथ था तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये थी कि वी नीड टू कॉर्नर द मार्केट ऑन लोकल प्लेयर्स. हमने रोबिन पावल को उस वक्त सेलेक्ट किया, जो अब ऑब्वियसली रोबिन इज बिकम काइंड ऑफ अ हाउस होल्ड नेम, वो हर जगह खेल रहा है. तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर आप कोई भी फ्रेंचाइज टीम बना रहे हैं, 100 हो गया, सीपीएल हो गया, आईपीएल हो गया, बिग बैश हो गया, हैज टू बी विद योर लोकल पाकिस्तानी प्लेयर्स, योर लोकल टैलेंट. Yeah, if you're watching this video, then if your team is struggling, this could be one of those reasons. If you are, for instance, you're Karachi Kings, तो आप देखेंगे एक भी उनकी टीम का प्लेयर पाकिस्तान को लिए इस वक्त खेल नहीं रहा. तो लोकल टैलेंट की उस तरह वेल्थ ऑफ वो नहीं है उनके पास. दे डोंट हैव अ वेल्थ ऑफ लोकल टैलेंट एट देयर डिस्पोजल. एक आखिरी सवाल लाहौर की बैटिंग में बस करूंगा. क्विक आंसर्स फ्रॉम बोथ ऑफ यू. Let's suppose Lahore lose an early wicket. Kamran Ghulam आपका slotted in at number 3 पे. Would you send him in the power play, or would you go with someone like Sam Billings? देखिए पर्सनली आप मेरे से पूछे तो आई विल गो विद सैम बेलिंग. लेकिन अब उस पे जो प्रॉब्लम आ जाएगी कि देन इफ कमरान गुलाम नॉट एट नंबर 3 देन वेल, क्योंकि फिर आपके 6-7 ओवर गुजर गए, 10 ओवर गुजर गए, तो देन यू माइट बी यूजलेस. फिर वो आप 7वें 8वें तक उसको वेट करवाएंगे. तो दोनों चीज़ों का आपका वो आई थिंक वो बैलेंस आपको चीज़ों का देखना होगा. बट आई थिंक जो अप्रोच नजर आ रही है और जिस तरह की पिचेस हैं और जिस तरह का पावर प्ले आपको चाहिए, तो आई विल गो विद सैम बिलिंग्स कि आपको पावर प्ले में तो रन चाहिए चाहिए, और आगे भी हाई स्कोरिंग मैचेस हमें नजर आ रहे हैं. तो पावर प्ले ही मेक और ब्रेक कर रहा है चीज़ों को. आई थिंक आई वुड गो विद सैम बिलिंग्स. I do What about agree. you, Ali?
Yeah, so I agree with Wasim bhai generally. I would say that Kamran Ghulam अभी हमने PSL में नहीं देखा ये वाली चीज़, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक में देखें, वनडे देखें या इवन T20 देखें recently, Kamran Ghulam has a lot of Rizwan vibes where thoda sa he starts off a little bit slow, lekin he has the ability to explode. Again, we haven't seen in the PSL, lekin हमने domestic cricket में देखा है कि he can go accelerate really quickly and get to that 100. अभी recently उसने T20 में भी 100 मारा है KPK के लिए. तो I think that the good thing about Kamran is that हम उसके अंदर improvement देंगे. The guy is very hungry to improve, right? तो I think that I would like to see him get the full opportunity at number 3, come in all positions, all different times. और फिर आपके पास वो पीछे सैम बिलिंग, सिकंदर रजा, हुसैन तलत, वो सिक्योरिटी तो ऑलरेडी मौजूद है ही. तो I wouldn't change too much. I would definitely, I think the जो वसीम का point है about Sam is valid. But I do like the idea of Kamran as your young player. उसको जाने दो, let him figure it out, let him solve the problem of batting a little bit Yeah, faster. उसमें ये हो सकता है कि let him go and give him the same role के what we expect from Sam Billings. Okay, it's not about the Tell him to name, go all it's out about the attack. role के यार हमें 6 ओवर्स की हमारी ये requirement Hmm. है. You go and figure it out. हमें 6 ओवर में 60 या 70 जितना भी runs करने हैं. You go and make it rather than के ये प्लेयर हमने स्पेसिफिक रोल के लिए रखा हुआ है, क्योंकि इस टीम के अंदर आप देखते हैं तो सॉर्ट ऑफ एंकर या रोटेटर जो आपको नजर आते हैं वो हुसैन तलत भी उसी कैटेगरी में आ जाता है अर्ली ऑन स्पेशली, और कमरान गुलाम भी आ जाता है. तो जैसे अली ने कहा है कि ये ऑप्शन भी है कि वो वहां पे जाए, क्योंकि अगर वो आउट भी हो जाता है उसके अंदर प्रोसेस के अंदर तो स्टिल दे हैव समवन इन द मिडिल ऑर्डर जो कि आगे थोड़ी सी स्टेबिलिटी उनको दे सकता है इफ नीडेड. लेकिन जिस तरह के मैचेस जा रहे हैं तो ये जो एंकर्स और रोटेटर्स है ना, इनका रोल जरा कम होता जा रहा है और प्रॉब्लम होती जा रही है उनके लिए. Yeah, some very good discourse over there. मुझे भी खुद समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरफ लीन कर रहा हूँ. My mind says Sam Billings, but I'm quite convinced by this argument that अगर कामरान गुलाम को तब नहीं भेजेंगे तो कब भेजेंगे, especially अगर आपके पास नीचे हुसैन तलत भी हैं. तो I mean if he's given this role तो फिर I hope he does succeed because he does have the numbers in domestic. बस वो PSL में breakthrough innings अभी तक नहीं आ पा रही, but we'll see कि वो आगे आती है कि नहीं आती. Moving on to more local talent, of course. राशिद खान की तो हम बात करेंगे ही, किस तरह उन्होंने इस तरह की पिच के ऊपर 4 विकेट हॉल ली. बट बिफोर दैट गेम बदली तो जमान खान ने है. जिस तरह वो आकर बॉलिंग करा गए इतनी तेज, पहली रैटल कर दिया रहमानुल्लाह गुरबाज को, फिर ऑफ कोर्स गॉट हिज विकेट एंड देन गॉट अनदर वन सून आफ्टर. शुरू में 3 ओवर करा दिए. शाहीन शाह अफरीदी ने, क्रेडिट टू हिम, काफी अटैकिंग बॉलिंग की, कप्तानी की उन्होंने. एंड जमान खान डिलीवर्ड 2 for 17 in 3 overs, bowled absolute rockets as well. और इनकी जो शॉर्ट बॉल आती है वसीम भाई, जिस तरह इनका एक्शन है, वहां से इस तरह की बाउंसर जिस तरह की इनकी है जनरेट करना बड़ा मुश्किल काम है. तो ओवरऑल हाउ इम्प्रेस्ड आर यू बाय जमान खान्स प्रोग्रेस? Like Zaman, I've been watching since I think for last 6 years when he was playing under 15. I think I was match referee those days. और इसकी स्टोरी थी कि किसी मदरसे में ये पढ़ता था एंड वन ऑफ आवर कोचेस सॉ ही प्लेइंग स्ट्रीट क्रिकेट. वहां से लेके इसको अंडर 15 में आए, फिर अंडर 19 में आया, तो ही केम थ्रू प्रोसेस. अब उसका जो सबसे यूनिक चीज है ऑब्वियसली स्लिंगी एक्शन की होती है कि कोई भी बॉलर, हालांकि कहने को सारे जितने भी स्लिंगी है एक जैसे लगते हैं, लेकिन समहाउ इनके एंगल्स की डिग्री जो है ना थोड़ा सा उसमें फर्क होता है. सलमान इरशाद का डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, मलंगा को देखते हैं तो बैट्समैनों को टाइम लगता है वो एंगल पिक करने के लिए. और इनका जो ज्यादा डेंजरस बॉल होता है वो फुलर बॉल होता है, क्योंकि इट्स कमिंग राइट फ्रॉम लाइक अंपायर के आगे से तो वो बॉल आ रहा है आपके पास. नॉर्मली यू डोंट गेट बॉल फ्रॉम दैट एंगल, यू गेट बॉल फ्रॉम दिस एंगल कि आपके सामने आई लाइन के सामने आपके आ रही बॉल. फुलर बॉल इनके ज्यादा थोड़े डेंजरस होते हैं. शॉर्ट बॉल भी उसके अंदर आ जाता है लेकिन वो लेंथ आप पिक कर लेते हैं तो आप एडजस्ट करते हैं. लेकिन आज जो बॉल किया कॉलिन मनरो को, आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटी एंड दैट you see rarely from a slingy bowler कि ball वो आम के साथ अंदर तो उनका आता ही है, but actually that ball it was full, it pitched and it straightened, इसकी वजह से वो edge लगा. I think that was a beauty. और जमान खान I think day by day देखें वो improve हो रहा है. और जिस टीम का भी कोई फास्ट बॉलर कैप्टन होगा ना उसके बॉलिंग के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएंगी, क्योंकि उसका दिमाग कप्तानी का जो बॉलर्स के लिए वो आपको बेहतर नजर आएगा. और आई थिंक Shaheen has been fantastic with his captaincy, especially when it comes to when they're fielding. I still don't agree, मतलब उससे मैं एग्री नहीं करता बैटिंग में खुद जो आ जाता है फिर उस पर मैं नहीं एग्री करता, लेकिन बॉलिंग के अंदर डेफिनेटली. और ये चीज आपको बॉलर्स के अंदर एक डिफरेंट, मतलब जमान लास्ट ईयर भी थे लेकिन जमान अब डिफरेंट नजर आ रहे हैं. तो जब वो कैप्टन आपके साथ खड़ा है ऑब्वियसली उसकी हेल्प भी कर रहा होगा, जो भी उसकी टैक्टिक्स है उसको डिस्कस कर रहा होगा. आई थिंक जमान जिस तरह बॉलिंग कर रहा है, तो यहाँ पे हम हारिस की शाहीन की बात करते हैं,
अब वहाँ पे हम नहीं रुकेंगे. We have to add जमान खान in that list कि लाहौर के पास ही स्पिन में तो राशिद है, फास्ट बॉलिंग में ये तीन उनके पास. अच्छा, उस दिन आप वसीम भाई कह रहे थे कि किस तरह आपको ना फील होता है कि व्हाई डोंट बॉलर्स गो फॉर इनफ यॉर्कर्स दीस डेज. टुडे यू सॉ इनफ यॉर्कर्स. आपने अगर इस्लामाबाद की इनिंग्स देखी हो तो ठीक है, पिट गए वो, मगर यॉर्कर ट्राई बहुत किया और हसन अली ने काफी इफेक्टिवली बोल भी किया. एंड देन ऑफ कोर्स लाहौर आल्सो बोल्ड रियली वेल. तो क्या आप खुश थे आज ये देख के? देखिए आपको इसलिए तो हसन के आप वो देखेंगे फिगर तो बेहतर नजर आ रहे हैं बाकी बॉलर से. इवन फॉर आई थिंक 33 रन, तो जहाँ पे बाकी सारों को मार पड़ी है. तो कोशिश की गई है, एग्जीक्यूशन उस तरह नहीं. फुल टॉस भी हमने इसीलिए बहुत ज्यादा देखी, ठीक है ना. शायद बॉल थोड़ा सा डैम था, वो वजह भी हो सकती है, या फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस आप कह सकते हैं. जो प्रैक्टिस ये नहीं होती कि आप 2 साल से कितने यॉर्कर करते आ रहे हैं. करंटली आप वार्म अप्स के अंदर मैच से पहले जो प्रिपरेशन हो रही है उसके अंदर आप कितनी ये चीजें ट्राई करते हैं. तो क्योंकि वो चीजें आपकी एकदम से मैच के अंदर आपने जाके जब वही करते हैं तो इट हेल्प्स. तो शायद वो चीज थोड़ी सी कमी नजर आ रही है. लेकिन इवेंचुअली अब आप मुझे बताएं, याली मुझे बता दे कि व्हाट एल्स द बॉलर कैन डू इन पिचेस के ऊपर इस जहां पे पिच कुछ पे भी तो नहीं हो वाकई. रहा, आपके बाउंसर भी बाहर जा रहे हैं, बॉल टर्न भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा. तो आगे बस ऑप्शन बचता ही कोई नहीं है जॉर्ज के अलावा. I think Wasim brings up a really good point, and this is something that I sometimes will talk about. But I think because हम सब लोग cricket देखते हैं और जो और sports हैं शायद हम इतना नहीं देखते. तो the sport that's most similar to cricket is baseball. तो baseball ने एक जो चीज़ figure out कर ली है वो ये है pitch sequencing, right? कि हम पहली बॉल ये करेंगे, फिर दूसरी बॉल ये करेंगे, तीसरी बॉल ये करेंगे. तो they have more complexity in how to set up a batsman. I think इस किस्म की जो pitches हैं, जो ground छोटा है, pitch बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बैट्समैन के फेवर में, उस जगह पे जो पिच की सीक्वेंसिंग है हैज़ टू बी स्पॉट ऑन, राइट. तो जैसे हम यॉर्कर की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम वही वकार यूनिस वाली लेग लेग पे मतलब फुल जो यॉर्कर है हम उसकी बात करते हैं. देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यॉर्कर्स, राइट. तो आई थिंक जब इस किस्म की पिचेस पे जो बॉलर का माइंड है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. उसके अलावा उसको पता होना चाहिए कि मेरी आर्मरी में ये 10 बॉलें हैं, अब मैं इन 10 बॉलों में किस तरीके से बैट्समैन को फूल करूंगा. जाहिर सी बात है पिच तो आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा. तो द यॉर्कर इज स्टिल वन ऑफ दोस डिलीवरीज दैट एक अच्छी यॉर्कर को मारना बहुत मुश्किल है. एंड इफ यू लुक एट शाहीन, हारिस एंड इवन जमान, बिकॉज ऑफ जमान's angle plus his pace, they're all very different. और Lahore benefits from a network effect as well. कि आपके पास राशिद भी है, शाहीन है, लेफ्ट आर्म है, स्विंग करता है, हारिस है, very different. जमान बिल्कुल different. तो जमान actually benefits in his development from having those guys around. तो आई थिंक जो इस किस्म की पिचेस हैं और मैं समझता हूँ हर पिच पे पिच सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक दैट वी नीड टू काइंड ऑफ क्रिकेट नीड्स टू शिफ्ट अ लिटिल बिट. और उसमें बॉल टू बॉल सिर्फ आप बॉलर पे नहीं छोड़ सकते कि यार देखो तुम जो जो तुम्हें अकल में समझ में आए तुम वो करो. नहीं, हम पहली बॉल ये करेंगे इस सिचुएशन में, दूसरी बॉल ये करेंगे, तीसरी ये करेंगे, चौथी ये करेंगे. आई थिंक वी हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन अ लिटिल बिट, स्पेसिफिकली ऑन दीस पिचेस जहां आपको पिच बिल्कुल मदद नहीं कर रहा. अच्छा, बात हम करें पिच की बिल्कुल ना मदद करने की, मगर एक बॉलर शायद इससे डिसएग्री करें. मे बी द सर्फेस डजंट मैटर फॉर हिम. दुनिया में जहां पे भी खेलें वो एक सुपरस्टार एंड आर्गुएबली, एंड अली यू कैन वॉइस योर ओपिनियन ऑन दिस, he is probably the hottest commodity in T20 cricket or white ball cricket right now. Rashid Khan 4 for 21 in this game. इतनी मैचेस भी नहीं खेले वो, 3 कम मैचेस खेले और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं. हर मैच में तकरीबन लाहौर को परफॉर्म कर दिया है. बीच में मेरे ख्याल से सिर्फ पेशावर के खिलाफ रन्स पड़े हैं, बाकी नो वन हैज बीन एबल टू फिगर हिम आउट. और आज तो जो मुबस्सिर वाली डिलीवरी थी pretty much unplayable, and some of those balls, आप मतलब जितने भी बड़े बैटर हो आप स्ट्रगल करोगे किसी भी सरफेस पे. तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट राशिद, क्योंकि ये तो एक जिस तरह की कहते हैं ना चैंपियन परफॉर्मेंस कि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि इस सरफेस पे इतना आप कर भी सकते हो, वो कर दिखाया उन्होंने. You know, the thing with Rashid is that, जब आप ड्राफ्ट में जाते हैं, आप टीम बना रहे होते हैं, you're looking for certainties. Wasim bhai can speak to this, right? Rashid is an absolute certainty. आपको पता है exactly वो क्या करेगा. On a bad day, he might give away 30 runs. तो क्या कहते हैं, he's amazing, he's phenomenal. I think जो एक चीज़ जिसके बारे में मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, पिचेस की बहुत ज़्यादा बात करते हैं. मैं ये समझता हूँ कि जो क्वालिटी है, इट ट्रैवल्स एवरीवेयर. राशिद इज क्वालिटी. किसी किस्म का भी पिच हो, कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है कभी कभार बैड डे आता है. हमने अफगानिस्तान वाले मैच में देखा जिस तरीके से शुएब मलिक ने उसके ऊपर हमला किया, नहीं इज वेरी सक्सेसफुल अगेंस्ट राशिद. बट अगेन आई थिंक जो लाहौर की जो कामयाबी का राज है, आई थिंक वो यही है कि दे हैव अ बॉलर लाइक राशिद देयर, हु मतलब आप सांस लेते हैं शाहीन के स्पेल के बाद तो राशिद आ जाता है.
It's unfair, honestly. It's unfair, and I think Yeah. they built a really, really strong attack. And Wasim bhai can talk more about Rashid, how difficult it is to play a bowler like him. Obviously, he played in the '90s era with Shane Warne. Probably played against guys like Mushtaq in domestic cricket as well. But वार्नी को भी खेला हुआ है वसीम भाई ने. it's just he's a phenomenal bowler. I think the एक चीज जिसको हमें सोचनी चाहिए कि Rashid plays everywhere, लेकिन Rashid's teams are not always successful. हमने BBL में देखा है और जगहों पे देखा है, Rashid's teams not be that successful. उसकी वजह ये है कि they've invested so many resources in Rashid that they're not able to build out the other parts of their team. I think जो लाहौर ने phenomenal काम किया है वो ये है कि they were able to fit in Shaheen, Fakhr, Haris and Rashid in the same team. And then they've got Zaman as your local talent, और अब तो वीसा भी इतने जबरदस्त बॉलर हो गए. But वसीम भाई, because you've played such quality spinners and leg spinners in particular in your lifetime, जरा लूपी रहे हैं वो, मगर राशिद जो है वो फ्लैट है, क्विक इन द एयर है. तो how difficult is that in particular to play? नहीं, एक तो मेजर डिफरेंस पेस का आ जाता है. दूसरा पॉइंट जो भी अभी रेज कर रहे थे कि राशिद की जो टीमें हैं वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है. बात फिर उधर ही आ जाती है कि जो आपके फॉरनर्स है ना वो आपको मैचेस जिताएंगे. राशिद मैचेस जिताता है, लेकिन चैंपियनशिप आपने जीतने हैं तो आपको लोकल प्लेयर्स ही जिताएंगे आपको. और लाहौर अगर चैंपियन बनता है इस साल भी तो वो राशिद की भी कंट्रीब्यूशन उसमें होगी, लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूशन आएगी वो उनके लोकल प्लेयर्स की जानिब से होगी. अब उसमें जो आप पॉइंट रेज कर रहे हैं, देखिए एक तो इसकी जो ट्री है वो तेज बॉल बॉलिंग करता है, उसकी वेरिएशंस, क्योंकि अगर आप ओवरऑल मतलब अब इसके आई थिंक इट गॉट टू डू विद T20 क्रिकेट, बिकॉज इट स्टिल इसके ऊपर मतलब रिसर्च ही आप कर सकते हैं कि जो बैटिंग का स्टैंडर्ड है अगेंस्ट स्पिन इट हैज केम डाउन. अगर आप इस करंट एरा की बात करते हैं, अगर आप 90s की बात करते हैं, अब इसमें T20 का मेजर फैक्टर T20 का आता है, क्योंकि पहले स्लो क्रिकेट थी, उसके अंदर बैट्समैन वर मोर फोकस ऑन द हैंड के हाथ से क्या बॉल आ रहा है, वो बहुत चीजें वहां पिक कर लेते थे. अभी आजकल के आई थिंक 60 to 70% जो बैट्समैन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली पाकिस्तान में भी यही मसला है कि दे कांट पिक रॉन्ग वंस फ्रॉम द लेग. बाबर से लेके नीचे तक हमारे जितने बैट्समैन है, आई थिंक एक शादाब है जो पिक कर लेता है, बाकी सारे स्ट्रगल करते हैं. आई थिंक ये क्रिकेट फास्ट हुई है शायद इस वजह से कि आपका इंटेंट ही पहले हिट मारने का है, यू अवॉइड टू मच अबाउट अदर थिंग्स अदर देन फोकसिंग ऑन बॉलर्स हैंड. एक तो ये रीजन हो सकता है, क्योंकि हमारे दौर में जो बॉलर बहुत तेज बॉल करता था वो इजी लगता था स्पिनर. हमें फंसाते वो थे शेन वॉर्न की, जो बॉल फेंकता था ऊपर, वो पड़ने के बाद निकलता था, क्योंकि यूज्ड टू पुट सो मेनी रेवोल्यूशंस ऑन द बॉल कि एयर में लगता था कि यार ये तो बिल्कुल ही हलवा आ रहा है. वो पड़ के जब स्लिप करके टर्न होता था, सेम गोज ऑन मुरली. आई रिमेम्बर फर्स्ट टाइम मुरली को जब मैं श्रीलंका में खेला, टेस्ट मैच हो रहे थे, तो उसने पहला बॉल किया तो वो कहते हैं ना कि वो छत पे आप खेलते हो नहीं, फेंक देते हैं बॉल, वो मेरे ऐसे दिन में मैंने कहा ये मुरली, दैट बॉल पिच्ड और मेरी रिब में आके वो बॉल लगा. टर्न हो के मेरे रिब कितना बाउंस मिला कि उधर मेरे रिब में आ गया. मैंने कहा ये डिफरेंस है. तो ये डिफरेंस उस दौर में हमें तेज बॉल करने वाले हमें इजी लगते थे, है ना. अब अदर वे राउंड है, क्योंकि ऑब्वियसली पावर हिटिंग का दौर आ गया, आपको थोड़ी सी एयर मिलती है, आप पावर से उसको हिट मार देते हैं. लेकिन राशिद की जो कंसिस्टेंसी है वो मतलब बड़े बड़े लेग स्पिनर्स भी आप उठा के देख लेंगे कि वो एक दो बॉल आपको हर ओवर के बाद आपको 1 और 2 बाउंड्री बॉल देते रहते हैं. लेकिन अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें जो स्पेशली लेंथ की है इसकी, ही हार्डली गिव्स यू एनीथिंग, और उसके अंदर फिर इसकी वेरिएशंस भी आ जाती है. तो रिमार्केबल कि जिस तरीके से वो इतना अच्छा हो गया, उसको ऑन द सीन है, और अभी तक वो कहते हैं ना कि फिगर आउट अभी तक कोई नहीं इसको कर सका कि यार इसको हमने एक्चुअली में खेलना कैसा है. आई थिंक मतलब जिस टीम के अंदर वो है तो मिडिल ओवर की आपकी टेंशन तो खत्म होगी कि राशिद है हमारे पास, मिडिल ओवर में हमें विकेट भी दे देगा, रन रोकेगा. तो आई थिंक शायद दिन हो गया यार कि बहुत अच्छा हो गया, अभी तक ये फिगर आउट नहीं इसको कर सके. काफी टाइम हो गया. और पहला ओवर आपने शाहीन आफरीदी का नेगोशिएट करना होता है, फिर आपने 4 ओवर किसी तरह बीच में राशिद के निकालने होते हैं. और ये चीज जो क्विकर लेग स्पिन वाली बोलिंग है, अभी रिसेंटली शायद आफरीदी ने बहुत अच्छी तरीके से 2009 से लेकर कोई 12-13 तक की थी, एंड ही वाज रियली एक्यूरेट और विकेट टू विकेट, एंड ऑल्सो कट करना एक इम्पॉसिबल सी चीज थी शायद आफरीदी को. राशिद को तो उससे भी ज्यादा इम्पॉसिबल है मेरे ख्याल से. बट एक क्वेश्चन जल्दी से लेते चले. आफरीदी का ये था ना कि आफरीदी का टर्न ये चीजें कम थी, बहुत कम सरफेस उसको. राशिद कैन एक्चुअली टर्न द बॉल, लेग स्पिन उसका इतना बड़ा टर्न नहीं होता, पर इसका जो रॉन्ग वन है इट टर्न. तो आपने मिस कर दिया तो फिर यू आर गोनर.
उस दिन तो उसकी मेरे ये ख्याल से क्वालिटी बाबर जिस ने भी मिस पेस के किया साथ है, और बिलिंग्स ने भी मिस किया. इट वेंट फॉर 4 बायज. दैट्स हाउ डिफिकल्ट दैट इज टू पिक. अच्छा, ये साकिब वो शाह हाथ से भी साहब पिक हमारे नहीं साथ होता हैं. और पेस इतनी है कि ये ऑफ द सरफेस भी आप पिक नहीं कर सकते, क्योंकि इट डजंट गिव यू एनी टाइम. And his numbers are proof of that talent. So Saqib Shah from the Relu Kate show, उनका एक सवाल है वसीम भाई आपके लिए specifically. Now we've seen Lahore do really well when they're setting targets. जब भी शाहीन शाह अफरीदी टॉस जीते हैं वो बैट फर्स्ट करना चाहते हैं. पिछले 15 मैचेस में जिसमें लाहौर ने बैट फर्स्ट किया उसमें 13 विक्ट्रीज हैं, 2 लॉसेज हैं. The numbers aren't the same when Lahore are chasing. तो क्या ऐसी चीज है जो लाहौर को शायद improve जिस पे करना चाहिए to become a better chasing team? देखिए उसमें अगर आप दोनों चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें आपको वीकर साइड उनकी स्टिल आई बिलीव उनकी बैटिंग आपको नजर आएगी. अगर वो उनका डाउनफॉल जो होगा उनकी बैटिंग की वजह से ही होगा. ऑब्वियसली एक आध वन ऑड डे उनका जाएगा, बॉलिंग में उनको मार भी पड़ेगी, लेकिन ऑन एवरेज अगर आप देखते हैं तो उनकी बैटिंग ही उनको वो अगर धोखा दिया तो बैटिंग ही देगी, क्योंकि उनका जो टॉप ऑर्डर है वो हैविली रिलायंस ऑन फखर जमान. अगर वो चेज भी कर रहे हैं तो फखर जमान की विकेट इज द की. तो वो जल्दी आउट होता है तो उनकी पूरी जो टीम है वो आपको गिरती हुई नजर आती है. तो आई थिंक थोड़ी सी जो इम्प्रूवमेंट अब मुझे नजर आ रही है कि अब्दुल्ला के आने से और सैम बिलिंग की जो फॉर्म लगी हुई है, थोड़ी सी इनको जो टॉप एक स्टेबिलिटी के साथ एग्रेशन चाहिए थी. तो आई थिंक अब इस करंट जो उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है इसमें आपको बेहतर रिजल्ट्स उसके अंदर भी मिल सकते हैं, लेकिन ऑल डिपेंड कि उनको स्टार्ट कैसे मिलता है. अगर इनको स्टार्ट अच्छा नहीं मिलता, आई स्टिल बिलीव कि ये 170 तक भी चेस करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा नीचे वाले जो उनके बैट्समैन. I think, yeah, I think on the topic of Lahore chasing, I think one thing that they have an issue with, or I think Wasim bhai mentioned it a little bit earlier, was with Kamran now and with Hussain Talla, they essentially have two guys that bat a little bit conservatively, but I think they sometimes choose the wrong option. अभी recently जो matches हुए हैं जिसमें ज़्यादा रन हो गए, हमने शाहीन को आगे आते हुए देखा, तो I think वो खुद confused हैं वो किस तरीके से अपने resources को इस्तेमाल करें. Personally, I would like to see Sikandar be more responsible in that role, because we've seen in the past Sikandar Raza for Zimbabwe kind of play more balls rather than just be this hitter जो हम अभी देख रहे हैं, more creative batsman. So I think that's where I think they need to figure that out. उनके पास थोड़ा सा बेहतर structure होना चाहिए. Last few matches में जब उन्होंने chase किया है, the Shaheen Afridi thing, it seems like a big panic. जबकि although एक जो उसकी जो सिल्वर लाइनिंग है पाकिस्तान के लिए कम से कम वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान को अब खेल रहे हैं और आपको पता है भाई शाहीन भी नंबर 9 पे आएगा, तो आई थिंक बहुत जो सेंस है वो एक सेंस है कि यार उनके पास एक और भी बैट्समैन है जो थोड़ी बहुत हिटिंग वगैरह अच्छी कर लेता है, थोड़ी बैटिंग भी कर लेता है, तो आई थिंक इट्स गुड फॉर पाकिस्तान. लेकिन आई थिंक जहाँ तक चेसिंग की बात है, आई थिंक दिस वाज द बिग इशू, एंड आई थिंक अगेन नॉट हैविंग दैट हैरी ब्रुक टाइप प्लेयर, उन्होंने काफी मतलब दे इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन हैरी ब्रुक. ही वाज काइंड ऑफ अ चीट कोड फॉर देम in the middle order. Yeah, बिल्कुल. और I mean, you know, the way they've started hitting सिकंदर रजा एक particularly, आपने दो बहुत अच्छी 50 और कर लिए अफरीदी ने, तो वो नंबर 9 पे फिर बड़ा मसला हो गया. He will play नहीं number नहीं, 7, और number 8. He will be after ये Babar. बहुत अच्छी सिल्वर मैंने लाइनिंग है ये. परफॉर्मेंस गेम टाइम उसको मिल गया ना, ये अच्छी एक सिल्वर लाइनिंग है कि कभी पाकिस्तान के लिए जरूरत पड़ी तो काफी चल सकते हैं. I और think सिकंदर रजा की it's good, but it's also deceiving, right? It could be deceiving. कि यार ये हमारे पास है, इसको भेज दो. But like वो बाद में वो सिकंदर रह गया, हुसैन तलत रह गया, बिल्कुल जो मे बी ज्यादा कर सकते थे उस सिचुएशन में शाहीन से. जो आई थिंक वसीम भाई का पॉइंट है कि जहां शाहीन 40 कर रहा है, हो सकता है वहां सिकंदर 70 करता मैच ले रहा था. तो वो एक इशू है. आई थिंक दैट्स एन इशू फॉर देम. अच्छा, सिकंदर रजा wasn't always this sort of a batter. He used to take his time to get in, but I guess उन्होंने core strength पे काफी, and you guys are better, of course आप लोगों को बहुत ज्यादा knowledge है इसकी, लगता है काम किया है, क्योंकि उनकी जो एक पुल है वो बहुत solid हो गई है, and when he hits it सही proper whack की आवाज आती है, तो उनकी जो transition है into a hitter now, you'd have to say after the knocks he's played, ये इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? Yeah, we actually Wasim bhai can definitely talk more expertly about this. We actually जो इस पे अगर मैं एक मिनट कर लूं बात के, ये जो नोटिसेबल चीज है सिकंदर रजा की, और डेफिनेटली जी वसीम भाई बोले आप. आई थिंक उनको शायद सिग्नल लूज हो गया. Not sure. Ali, maybe you can fill in till then. Yeah, so me and Wasim bhai actually talked about this in another podcast about how we've seen this transition where Sikandar was very much kind of this conventional middle order batsman who bowled off spin in a very conventional type of off spin, and how he's transformed himself, right? And it's incentivization of money, right? It's like मुझे पैसे बनाने हैं, मुझे पूरी दुनिया में लीग्स खेलनी है.
How would I do that? And he's like, he essentially transformed himself from being this very conventional cricketer to being this kind of mystery type spinner, like mystery Yeah. type spinner, In swing bowler. taking up like Sunil Narayan's action in the middle of his career, towards the end of his career, in fact. Yeah. And He's quite old. yeah, and he's become this like really super powerful, aggressive batsman. And I think it's like something that other players can learn from. Ki aap develop. There's no limitation on when you can develop, right? You can develop in your late 30s, you can develop in your early 30s. And we've had this a little bit of criticism on Sarfraz that Abhi Sarfraz is trying to hack the ball to mid wicket against fast bowling. He should have figured out another shot as a solving of that problem, to solve that problem. Excuse me. And I think Sikandar has figured that out, right? And I think there's other players like him. So I think it's like it should give hope to other players. If you work on your game, you can transform yourself. Because if you look at it, Sikandar used to be in Karachi. This is not the Sikandar we saw for Karachi. And I think it's amazing. I think Wasim bhai can talk more about किस तरीके से एक प्लेयर डेवलप कर सकता है अपनी गेम को away from, हम तो वो देखते हैं ना जो मैच डे पे होता है उसमें ये आउटकम क्या हुआ. But what about all those hours that they have in between matches, in between tournaments, to work on their body, to work on their physical discipline, to work on their development, their shots, their grips, etc., etc. देखिए इसमें जो सबसे एक मेजर जो पॉइंट है और आई थिंक जो बिगिनिंग पॉइंट है यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ वन यू नीड टू डू इट सेकंड आई कैन डू इट और थर्ड आई हैव टू डू इट आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. प्रॉब्लम उधर ही आती है जहाँ पे आप अपनी लिमिटेशंस पे तो यार मैं तो इतना ही खेल सकता हूँ, ठीक है. इन सर्टन केसेस कुछ नाम अभी मेंशन किए अली ने भी, वो लग रहा है ऐसा है कि उन्होंने कहा जी बस हम इधर तक ही हैं, इससे आगे हम नहीं जा सकते हैं, इसके अंदर ही रह के हम जो कर सकते हैं वो करेंगे. लेकिन सिकंदर रजा को अगर हम देखते हैं तो आपको जो मेजर एक डिफरेंस नजर आता है ऑब्वियसली लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बॉलिंग तो ये चीज जो वो कर रहा है ना, ये तो नॉर्मली बैट्समैन होते हैं ना इन द नेट्स दे कीप एक्सपेरिमेंटिंग, स्पेशली जो आपके नॉन रेगुलर बॉलर होते हैं, कभी लेग स्पिन कर ली, कभी ऑफ स्पिन कर ली, उसके अंदर आप सीखते रहते हैं चीजें और वो इन्वेंट होती रहती हैं आपकी चीजें. लेकिन बैटिंग में जो एक मेजर डिफरेंस आपको आपका सिकंदर रजा में और पिछले सिकंदर रजा में नजर आएगा वो उसकी बैट स्विंग है. अभी आप सरफराज की जो बात कर रहे हैं उसकी बैट स्विंग नहीं है कि वो वहां से बॉल लगेगा अभी तो वो सर्कल से बाहर नहीं जाएगी. सिकंदर रजा का अगर पहले वाला सिकंदर रजा देखते हैं, इट वाजंट फ्लुएंट, उसकी जो बैट स्विंग थी वो फ्लुएंट नहीं थी, उसको परफेक्ट टाइमिंग परफेक्ट जोन के अंदर बॉल चाहिए, वहीं से उसकी हिट जाती थी. लेकिन अब उसकी इतनी वो फ्लुएंट उसकी जो बैट स्विंग है और उसकी जो बैट स्पीड है, हैंड स्पीड है, इतनी तेज वो हो गई है, बेस उसने अपनी स्ट्रॉन्ग की है कि बहुत ज्यादा हिले जुले बगैर ही कैन जस्ट रीच फॉर द बॉल एंड स्विंग हिज आर्म. सो ये एक मेजर डिफरेंस है और ये कहने को बड़ी आम सी बात लग रही है, हाँ भाई हैंड स्पीड तेज कर लो, अपनी बैट स्विंग अच्छी कर लो, बट टेक्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस. इसके लिए काफी आपको मेहनत करना होती है डिफरेंट सिनारियोज के अंदर, फास्ट बॉलर्स पे, स्पिनर्स पे. तो आई थिंक वो मेहनत आपको नजर आती है. और आई थिंक अली जैसे अली ने बात की है कि इट्स एग्जांपल फॉर अदर्स, आई थिंक हर दौर के अंदर आपको एग्जांपल्स तो मिलती रहती हैं, इस तरह की नजर आती रहती हैं चीजें. इट्स जस्ट some people get convinced and some just they're too stubborn to और वो उनकी ग्रोथ इसलिए रुक जाती है कि नहीं हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं. तो आई थिंक बहुत से आपको ग्रेट्स भी नजर आएंगे कि जो बैटिंग उन्होंने इम्प्रूव की, चाहे आप वसीम अकरम की बात करते हैं और भी इस तरह के आपको आएंगे नाम. जैसे अभी शाहीन की आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि यार वो बॉलिंग में तो चल रहा था लेकिन बैटिंग में ये वजह सॉर्ट ऑफ आपका बिल्कुल टेल एंडर था, लेकिन उसने बड़ी मेहनत की है बैटिंग के ऊपर. अब ये नहीं कि वो बैट उठा के अंदर चला गया, उसने रन कर लिया. आई बीन फॉलोइंग फॉर लास्ट 2 इयर्स कि दे आर टेकिंग देयर बैटिंग टू सीरियस. और इसमें क्रेडिट जाएगा मिसबा का कि व्हेन ही वाज द कोच, क्योंकि मिसबा का ये था कि मेरी जो टेल है इसको भी बैटिंग आनी चाहिए, कम से कम हमें 50 से 60 रन हमें ये ऑफर करें. सो ही यूज्ड टू टेक देम टू द नेट्स, चाहे वो हारिस है, शाहीन है, नसीम है, जितने भी बॉलर्स खेल रहे थे उनके साथ एक्स्ट्रा आवर्स वो लगाते थे. और उसके बाद ऑब्वियसली व्हेन दे गेट कन्विंस्ड देमसेल्व्स लाइक शाहीन, तो उसके बाद अब वो आपको उसमें बेहतरी नजर आ रही है. तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी सबके पास होती है, इट्स जस्ट अबाउट कि मैंने कौन सा लेवल, कौन सी ग्रेटनेस के लेवल पे मैंने जाना है. तो आई थिंक वहां पे चीजों और कैरेक्टर का पता चलता है. I think two things, Behram. I'm sorry to interject, that I want to add and just follow up on what Wasim has talked about. I'm going to bring baseball back in, तो आप ज़्यादा बोर नहीं होइएगा. Baseball, obviously, उसमें जो technology है baseball में वो next level है. It's the most technologically savvy sport in the world. Because it's like cricket, we can learn a lot from it.
तो बेसबॉल के अंदर एक ज़माने में होम रन की इतनी अहमियत नहीं थी जितनी अब है। तो होम रन इज़ बेसिकली इक्विवेलेंट टू हिटिंग अ सिक्स। तो जो लॉन्च एंगल है, जिस तरीके से आप बैट को ऊपर करते हैं, जिस तरीके से आप बैट को लेके आते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। जब भी कोई प्लेयर होम रन हिट करता है तो फ़ौरन स्टैटिस्टिक आ जाती है टीवी पे कि उसका ये लॉन्च एंगल है। तो बहुत सारे जो बैट्समैन हैं बेसबॉल के अंदर जो शायद साल में 10 होम रन मारते होंगे, वो 25 होम रन मार रहे हैं। अब वो 25 होम रन इसलिए मार रहे हैं कि उनके लॉन्च एंगल के ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती जा रही है। तो जैसे अगर आप इमाद वसीम इज़ अ गुड एग्जांपल कि इमाद वसीम का जो लॉन्च एंगल है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह से वो यू नेवर सी हिम हिट द बॉल वेरी हाई इन द एयर। तो जिस तरीके से जब क्रिकेट के अंदर टेक्नोलॉजी ज़्यादा आएगी और प्लेयर्स को एहसास तो हो ही गया है कि क्या कहते हैं, उनके मतलब जो ज़िंदगी है, जहाँ तक जितने पैसे वो बनाएँगे, तो इसी में है कि उनको हार्ड हिटिंग करनी है। जिस तरीके से अब सिकंदर ने अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किया है, तो यू विल सी these concepts like launch angle and exit velocity that are very popular in baseball become part of cricket. And they're just going to be जिस तरीके से हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, आप देखेंगे स्क्रीन पे के ऊपर कि इस बंदे ने छक्का मारा, इतना तेज़ मारा उसने छक्का, उसकी बैट स्पीड इतनी ज़्यादा थी, उसके रिस्ट इतने स्ट्रॉन्ग थे। तो क्या कहते हैं, I think you're going to see these things and they're going to help you in the development, right? So we've seen this in baseball. अब इसका एक ट्रेड ऑफ है, ठीक है, जहाँ वो अब प्लेयर्स होम रन ज़्यादा मार रहे हैं, वो आउट भी ज़्यादा हो रहे हैं, बिकॉज़ ज़ाहिर सी बात है गोइंग मोर फॉर शॉट्स। तो वही क्रिकेट में आप देखेंगे कि शायद वो जो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अब छक्के ज़्यादा मारने शुरू होंगे, लेकिन फिर वो आउट भी ज़्यादा होंगे, उनके एवरेजेस भी थोड़े लो होंगे। तो वी हैव टू एक्चुअली चेंज आवर माइंड अबाउट टी20 का एवरेज की क्या अहमियत है, वनडे की एवरेज की अहमियत क्या है, टेस्ट क्रिकेट का क्या है, स्ट्राइक रेट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो तब्दीलियाँ हैं, आई थिंक दीज़ आर गुड थिंग्स दैट आर इंशाल्लाह will come from baseball to cricket, और उसमें क्रिकेट में आप डेवलपमेंट देखेंगे। But the reason I'm bringing this up is not to actually bore people, is that Pakistan has an advantage. Pakistan, we need to educate our people about these things. तो पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान ये चीज़ें पहले ले। क्यों ऐसा होता है कि हम इंग्लैंड में चीज़ देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं और उससे हम इम्प्रेस हो जाते हैं। व्हाई डोंट वी टेक द इनिशिएटिव ऑन दीज़ थिंग्स? तो यू नो आई थिंक जैसे हमने वसीम भाई को देखा, माजी में हमने सेलेक्टर्स को देखा, नेवर यूजिंग डेटा, बस मतलब अचानक कोई भी चीज़ कर दी। तो वी आर सीइंग दैट एवोल्यूशन। वी नीड टू कंटिन्यू दैट बिकॉज़ सो वी कैन बी द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। और वसीम भाई की एक अच्छी बात ये थी कि हमेशा जब अपनी सिलेक्शन करते थे तो साथ कुछ ग्राफ्स एंड चार्ट्स वगैरह दिखाते थे व्हिच वुड रैशनलाइज हिज सिलेक्शंस। बट एनीवे, लॉन्च एंगल की आपने बात की तो वो तो फिर आपके ही रॉबिन पावल का एक है खास लॉन्च एंगल, तारे तक पहुंचा देते हैं बॉल को। एंड आई गेस जस्ट टू फिनिश ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन, जनरली आई थिंक किसी भी शोबे के अंदर आपको हमेशा एक एवोल्यूशनरी माइंडसेट रखना चाहिए, यू नो, ग्रोथ एंड लर्निंग माइंडसेट। एंड उसके अलावा आपकी हमेशा स्टंटेड रहेगी ग्रोथ, एंड टू इवॉल्व इज वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स। One last thing that I want to talk about before we end today's show is the points table. Lahore ने अब deservedly so top 2 spot अपना confirm कर लिया है, and I guess we'll all agree that out and out best unit Lahore ही लग रही है इस वक्त. But let's talk about Islamabad a bit. आजम आज इंजर हो गई, we don't know if he'll be fit for the remainder of the tournament. कितना ज्यादा impact होगा इस्लामाबाद को if Azam is ruled out? And you know, they've been generally really good versus all teams, मगर लाहौर के खिलाफ इस्लामाबाद looked absolutely at sea. मतलब मुकाबला था ही नहीं, बिल्कुल कंप्लीटली ओब्लिटरेट किया है लाहौर ने इस्लामाबाद को। सो मूविंग फॉरवर्ड इनटू द टूर्नामेंट, इस्लामाबाद के लिए क्या वरीज नजर आ रही हैं आपको, एंड हाउ डू यू गाइस सी दिस टीम प्रोग्रेस? वसीम भाई आप पहले करें। देखिए, एक तो जो डिफरेंस है कि इस्लामाबाद के जितने भी बैट्समैन, स्पेशली हमारे लोकल प्लेयर्स, दे आर वेरी गुड अगेंस्ट स्पिन। चाहे आजम है, चाहे आसिफ है, बाकी उनके शादाब है। लेकिन जब लाहौर से मैच होता है, दूसरी तरफ इज नॉट ओनली स्पिन, इज राशिद, विच इज अ मैसिव डिफरेंस कि स्पिनर और राशिद के आने से बहुत फर्क पड़ता है, क्वालिटी का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब दूसरा जो आजम की डेफिनेटली बहुत बड़ा एक मतलब होगा, इनको एक झटका लगेगा अगर वो नहीं खेलते आगे चल के, क्योंकि आसिफ कोई अच्छी फॉर्म में उसका नजर नहीं आ रहे हैं अभी तक। होता है ना कि वो स्लॉट इन हो जाएंगे, आजम वाला रोल वो ले लेंगे कि वो चौथे पांचवे पे आ जाएंगे। अभी तक उस तरह की बैटिंग हमें आसिफ की जाने से भी नजर नहीं आएगी। तो फिर होगा क्या कि फिर इस्लामाबाद भी वही टीम बन जाएगी कि जो ज्यादा रिलाई करेगी अपने टॉप 3-4 के ऊपर, नीचे वाला उनका भी गड़बड़ हो जाएगी कि वहां पे आजम भी नहीं है, आसिफ की जो है वो फॉर्म भी क्वेश्चन मार्क चल रही है। तो काफी ज्यादा इससे उनको फर्क पड़ेगा। लेकिन आई थिंक 200 से ज्यादा, मतलब कोई भी और टीम होती है आज, तो आई थिंक वी वुड हैव सीन अ बेटर शो फ्रॉम इस्लामाबाद। क्वालिटी ऑफ बॉलिंग थोड़ी सी भी हल्की होती, तो आई थिंक थोड़ा सा ये मैच आगे जाना था, क्योंकि आज अच्छे बॉलों पे आउट हुए हैं। ये नहीं कि 225 के चक्कर में हिट हिट मार के बच्चे आउट हुए हैं, एक्चुअली गुड बॉल्स। तो 170 भी आप चेज कर रहे हो तो इस तरह के बॉल आपको पड़ते तो आपने आउट ही होना था।
तो आई थिंक क्वालिटी का बहुत फर्क नजर आया, लेकिन अब आजम का डेफिनेटली एक तो होता है ना कि एक प्लेयर के जाने से वो स्लॉट आपकी खाली हो जाती है, लेकिन ओवरऑल जो इंप्रेशन विद इन द ग्रुप होता है ना, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जब आजम पीछे बैठा हुआ है, उसकी जिसमें उसकी फॉर्म लगी हुई है, तो ऊपर वाले प्लेयर्स भी आपके ना वो सॉर्ट ऑफ फ्री ऑफ माइंड होकर खेलते हैं कि यार कुछ हो भी गया तो बाकी काम आगे आजम कर लेगा। अगर आजम नहीं है आपका इनफॉर्म बैट्समैन अवेलेबल, दैट विल पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन गुरबाज, आपका मनरो के ऊपर, एलेक्स हिल के ऊपर कि यार वी हैव टू फिनिश द जॉब, और फिर उनका माइंडसेट थोड़ा सा वापस आना शुरू हो जाएगा, जो कि एक नॉर्मल रवायती अंदाज है, नॉट डिफेंसिव माइंडसेट से, लेकिन शायद उनके जहन में ये चीज आ सकती है। तो ह्यूज लॉस होगा यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड। Ali, would you like to add something to that? Yeah, I mean, I think agree 100% with Wasim. It's a huge, huge loss if it in fact happens. Obviously, it would not be good for Azam, obviously, to get injured. It wouldn't be good for PSL because he's definitely been the superstar of this league this year. और आज नजर आ रहा था कि आजम पीछे नहीं है, तो there was no kind of कुछ भी नहीं हो सकता इसलिए वो पीछे नहीं है. So I think it's a huge loss. I think Islamabad will have to change a little bit the way they kind of go about things. I think they can still be aggressive. I think what they will need more is more Shadab. Shadab has to, the best version of Shadab now would have to come forward, because जो चीजें आजम करता है वो तो कोई भी नहीं करता, आसिफ भी नहीं करता, फहीम भी नहीं करता, लेकिन they have a lot of depth, and the one guy that we haven't seen really turn up as a batsman or even as a bowler for Islamabad is Shadab. So देखा जाए तो they're second in the table, लेकिन जो उनका एक best player एक तरीके से Shadab, he hasn't really fired. So I think Shadab really needs to come to the fore and be that guy to number 4 या 5 पे आके टीम को लीड करे, कैरी करे. I think again the one good thing about Islamabad, उनका depth बहुत है. I think एक जो चीज़ है उनकी जो bowling है, maybe they've started to figure out a little bit in terms of के शुरू में हमने फजल हक को देखा नहीं देखा. He's I think been pretty consistent, and I think Hassan is getting a little bit better. लेकिन I think जो dynamism है उनकी bowling में तो वो तो बिल्कुल नहीं है. I personally would like to see them play Zafar Gahar and go with the 3 spinners in Lahore, जो थोड़ा बड़ा ground है, Zafar, Mubassir and Shadab. I'm very much into spinners, I guess. Abrar भी है वैसे. Yeah, but I think वो 3 इसलिए Zafar फील्डिंग भी अच्छी करता है, थोड़ी बहुत बैटिंग भी, और उसकी बैटिंग इतनी मैटर नहीं करेगी इस्लामाबाद के लिए, लेकिन I think having that left arm angle against right-handed batsmen, I think gives Shadab more options to be tactical. It's definitely a very important question to ask, क्योंकि let's suppose they do finish in the top 2. They have no answers versus Lahore. तो कुछ ना कुछ तो फर्क करना पड़ेगा ना, अगर आपने लाहौर को हराकर फाइनल में जाना है, और अगर आप वो मैच हार भी जाते हो, let's suppose you do win the eliminator, वापस तो आपको लाहौर मिलनी है. So I think ultimately Islamabad at this stage of the tournament really need to figure that out, कि हमने लाहौर को जब फिर से खेलना है, जो कि inevitable है एक तरह से, unless they really mess things up, किस तरह हराना है. क्या कहेंगे वसीम भाई आप इस पे? catches win matches. कैच पकड़ने शुरू कर दे, सही, फील्डिंग इंप्रूव कर ले, इस तरह के चांसेस अगर जैसे बैट्समैन को ना दे, तो आई थिंक रिजल्ट्स डिफरेंट आ सकते हैं. और फिर आई थिंक फिर फखर ने प्रूव किया है कि वही उनका मेन जो बैटिंग उनकी लेके चलता है जमान. तो अगर आई थिंक टीम्स टारगेट करें, उस पर थोड़ी और वर्किंग करें अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, जो पिच की सिचुएशन चल रही है, फखर को आपने जल्दी आउट करना है, तो आप समझ लें कि आपने आधी जो बैटिंग है लाहौर की उसको हिला के रख दिया. दैट इज द बेस्ट चांस फॉर इस्लामाबाद. और नॉर्मली मैंने देखा है हसन ही बॉल्स वेल अगेंस्ट द लेफ्ट हैंड. तो आई थिंक अगर उनका मैच आता है तो Hassan Ali will create again chances against Fakhar Zaman, and that will be the best chance for Islamabad. Because if they can pick up early wicket of Fakhar Zaman. चलो, if you guys caught that, remember this. और अगर ये हो गया तो हम फिर से जरूर करेंगे इसकी शो पे बात. And any final thoughts, Ali, just before I conclude the show? No, it's great to be back on as on a different side. Good to see Wasim again, and Behram, you're doing a great job. Thanks, and thank you both of you for taking out the time. Wasim bhai as always, and Ali as well. कल बहुत बड़ा मैच है viewers. Peshawar versus Multan. The winner will effectively book a place in the final playoffs. मगर फिर भी उसके पास एक chance होगा top 2 का if Islamabad lose. The loser will have no chance to make top 2, but will still have a chance to make the playoffs. That's all for today. Thank you so much for tuning in. Khuda Hafiz.